projections of planes. This call is now being recorded. Okay. So last class or in last 3 to 4 classes, so we have discussed about projection of lines. Projection of lines के बारे में हम लोग discuss किए थे. Now from today's lecture we will discuss about the projections of planes. Okay. So plane means this is nothing but a two-dimensional, means like this one. So this is a plane, one plane, and this plane is actually the parallel with respect to this horizontal plane. Horizontal plane से parallel है and perpendicular to this vertical plane. Okay, so plane means this plane has only height, means width and breadth. Okay, means width and length और breadth जो भी कहेंगे, length and width ही है, इसको कोई डेप्थ नहीं है, मीन्स 3 डायमेंशन फिगर नहीं है. पढ़ते हैं. Clear? So plane means a 2-dimensional figure, means have only length and width. Okay. So plane का कैसे प्रोजेक्शन करूंगा? Okay, clear. So as for example, plane like a A4 sheet paper. A4 sheet paper is example of plane. Now, if we do the projections of A4 sheet paper, and if the A4 sheet paper is means parallel to who? The horizontal plane and vertical to the means the perpendicular to this vertical plane, then what will be the projection? Projection is type की होगी. Okay. So a plane is a two-dimensional object. Clear? Means a two-dimensional object है, not 3 dimension. Not a 3 dimensional means जो solid object होता है, solid object नहीं है, 2 dimension है, 2 dimensional object है, having length and breadth only. Its thickness is always neglected. means इसका जो thickness है, thickness neglect किया जाता है. And various shapes of plane figures are considered, such as a square plane. आपका माइक इशू है. साउंड नहीं आ रहा सही से? आवाज नहीं आ रहा है मेरा? हेलो, आ रहा है सर, आवाज आ रहा है सर. आ रहा है ना? Okay, so just remember that the plane is a two-dimensional object. Two-dimensional object having only the length and breadth. Okay, इसका जो thickness है, thickness neglect किया जाता है. And various type of planes means various shapes of the planes there. जैसे स्क्वायर शेप हो सकता है, रेक्टेंगल टाइप हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ट्रापीजॉइड टाइप हो सकता है. ओके, पैरेललोग्राम हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, डायमंड शेप भी हो सकता है. ओके, मीन्स अगर मैं A4 पेपर से डिफरेंट दिस टाइप ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ प्लेन, डिफरेंट शेप्स ऑफ प्लेन में
उसे काट करके मैं कर पाऊंगा ना। सो So just remember this one. This plane is nothing but a two dimensional object. इसका जो थिकनेस है, थिकनेस नेगलेक्ट किया जाता है। तो थिकनेस नेगलेक्ट किया जाता है मीन्स अगर मैं इसको प्रोजेक्शन करूंगा, सपोज इफ द प्लेन इज दिस वन इज अ प्लेन and this plane is actually denoted by A, B, C, D. Means जो फोर कॉर्नर है, फोर कॉर्नर, one is denoted, this corner is denoted as A, B डिनोट किया जाता है, C and D, फोर जो कॉर्नर है A, B, C, D से डिनोट किया जाता है। एंड अगर मैं प्रोजेक्शन करूंगा इस प्लेन को, तो इसमें जो दिस प्लेन एक्चुअली पैरेलल टू दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो टॉप व्यू में किस मिलेगा, टॉप व्यू में एक स्क्वायर टाइप शेप मिलेगा, स्क्वायर मीन्स रेक्टेंगल टाइप शेप मिलेगा। बट फ्रंट व्यू में क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू में ओनली एक लाइन मिलेगा। क्यों लाइन मिलेगा, क्योंकि इसका विड्थ जो है, थिकनेस इज वेरी नेग्लिजिबल, मीन्स जस्ट द थिकनेस ऑफ ए लाइन का जो थिकनेस है, इतना ही थिकनेस कंसीडर किया जाता है। ओके, सो इसका फ्रंट व्यू में ओनली एक लाइन ही मिलेगा। एंड साइड व्यू में क्या मिलेगा, साइड व्यू में एक लाइन मिलेगा, क्योंकि दिस प्लेन इज पैरेलल टू दिस वर्टिकल प्लेन। ओके, नाउ इफ दिस मीन्स देयर मे बी डिफरेंट केसेस और different position of the plane. This plane may be either parallel to one plane and perpendicular to the another plane. This plane may be parallel to the one plane but inclined to the other plane, and this plane may be inclined to both the plane. Okay, so there may be three different situations. Plane may be parallel to one plane and perpendicular to the other plane, may be parallel to the one plane and inclined to the another plane, and may be inclined to the both the plane, inclined with respect to both the planes. Okay, so projection of planes, or the meaning of projection of meaning of the trace of a plane. So it is defined as the extension of a given plane shaped to the reference plane. So reference plane means with respect to horizontal plane and vertical plane to which it is perpendicular or inclined. Okay, मीन्स जो मैंने बताया, मीन्स पोजिशन ऑफ ए प्लेन्स और ट्रेसिंग ऑफ ए प्लेन्स, हाउ कैन यू ट्रेस किया जाता है इसे, जो प्लेन जो रेफरेंस जो प्लेन है, एचपी एंड वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन से रेस्पेक्ट में उस प्लेन का पोजीशन क्या है, पैरेलल है, इंक्लाइंड है, मींस पैरेलल टू वन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द अदर्स, parallel to one and inclined to the others, or inclined to the others. Okay, so so this situation may occur, means this following situation, जैसे प्लेन पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन और परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक सिचुएशन हो सकता है, और प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन एंड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन. Okay, means these two are under the first category. Plane may be parallel to the one plane and perpendicular to the other's plane. Another situation may be plane parallel to the vertical or horizontal plane, or both perpendicular to the vertical and horizontal plane. Okay, means plane, vertical plane and horizontal planes से रेस्पेक्ट में पैरेलल हो सकता है और परपेंडिकुलर भी हो सकता है.
Second situation, the planes perpendicular to the vertical plane and inclined to the horizontal plane. Means कोई एक प्लेन पैरेलल है एंड दूसरा जो प्लेन है उसी रेस्पेक्ट में इंक्लाइन है. And third category, planes inclined to both the planes, means vertical plane and horizontal planes. Now कैसे नोटेशन किया जाता है? जो अगर प्लेन means shape of the plane is like rectangle, then we denote the plane as A, B, C and D. Okay, 4 points are there. Okay, A, B, C and D. And these 4 points are denote if we take the view in top view. अगर मैं top view लूंगा तो इसी 4 पॉइंट को A, B, C से डिनोट किया जाता है. मीन्स स्मॉल A, B, C. ओके, अगर टॉप व्यू लूंगा तो टॉप व्यू मीन्स कौन सा प्लेन में मिलेगा? कौन सा प्लेन में मिलेगा टॉप व्यू? हेलो सर हॉरिजॉन्टल प्लेन में. हॉरिजॉन्टल प्लेन. सो हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्लेन का जो प्रोजेक्शन है उसी 4 पॉइंट को डिनोट करूंगा ए, बी, सी से. क्लियर? इन फ्रंट व्यू कैसे डिनोट करूंगा? ए प्राइम, बी प्राइम एंड सी प्राइम एंड डी प्राइम. If the type of plane is like a rectangle or a square, okay, or diamond type shape, okay, then we'll denote the front views of these 4 points A, B, C as A prime, B prime, C prime and D prime. If the shape of the plane is like a triangle, then we denote 3 points. There are 3 points. By 3 points we can make a triangle ABC. Okay, then in front view these 3 points we denote A prime, B prime and C prime. So ये कौन सा प्लेन में मिलेगा फ्रंट व्यू? इन विच प्लेन? कौन सा प्लेन में मिलेगा? सर फ्रंट व्यू. फ्रंट व्यू सर वर्टिकल प्लेन में मिलेगा सर. ये वर्टिकल प्लेन में मिलेगा. गुड. तो इन वर्टिकल प्लेन जो प्लेन है ए, बी, सी, डी, जो 4 पॉइंट्स है ए, बी, सी, डी, इसको कैसे मैं डिनोट करूंगा? ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम एंड डी प्राइम. ओके, सो वर्टिकल प्लेन में जो प्रोजेक्शन मिलेगा इसी 4 पॉइंट को ए, बी, सी, डी 4 पॉइंट को ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम एंड डी प्राइम से डिनोट करूंगा. ओके, साइड व्यू कौन सा प्लेन में मिलेगा? प्रोफाइल प्लेन में. प्रोफाइल प्लेन. गुड. पीपी प्रोफाइल प्लेन में मिलेगा. तो प्रोफाइल प्लेन में जो प्लेन ए, बी, सी, डी है, these 4 points A, B, C, D कैसे डिनोट करूंगा? A डबल प्राइम, B डबल प्राइम, C डबल प्राइम एंड D डबल प्राइम. क्लियर? सो ओनली हॉरिजॉन्टल प्लेन में ओनली A, B, C एंड वर्टिकल प्लेन में A प्राइम, B प्राइम, C प्राइम, D प्राइम एंड प्रोफाइल प्लेन में जो प्लेन का ड्राइंग करूंगा इसी 4 पॉइंट्स को A डबल प्राइम, B डबल प्राइम, C डबल प्राइम एंड डी डबल प्राइम से डिनोट करूंगा. क्लियर? यस सर. नाउ फॉर द फर्स्ट सिचुएशन. ओके, नाउ इफ आई कंसीडर द फर्स्ट सिचुएशन मींस a plane is perpendicular to the horizontal plane and
parallel to the vertical plane. So this A, B, C, D so this one is A, B, B, C and D. This plane is perpendicular to this horizontal plane and parallel to this vertical plane. Okay, so इसको अगर मैं प्रोजेक्शन करूंगा, प्रोजेक्शंस मीन्स फ्रंट व्यू में क्या मिलेगा, टॉप व्यू में क्या मिलेगा एंड साइड व्यू और प्रोफाइल प्लेन में क्या मिलेगा, है ना। इसको अगर फ्रंट व्यू लूंगा, फ्रंट व्यू मीन्स इन दिस डायरेक्शन, है ना, फ्रंट व्यू इन दिस डायरेक्शन। तो फ्रंट व्यू में क्या किस टाइप शेप आएगा, एक जस्ट स्क्वायर टाइप शेप आएगा, है ना, स्क्वायर टाइप शेप एंड स्क्वायर टाइप जो शेप मिलेगा, दिस स्क्वायर शेप विल गेट द ट्रू लेंथ ऑफ एवरी साइड, है ना, ट्रू लेंथ ऑफ एवरी 4 साइड, 4 जो साइड है ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, 4 साइड जो है उसका जो लेंथ है ट्रू लेंथ मिलेगा। क्यों ट्रू लेंथ मिलेगा, बिकॉज दिस प्लेन इज पैरेलल टू दिस वर्टिकल प्लेन, क्लियर, दिस प्लेन इज पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन। सो इन फ्रंट व्यू विल गेट लाइक दिस स्क्वायर टाइप शेप मिलेगा एंड द लेंथ ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम एंड डी प्राइम ए प्राइम, इसे ट्रू लेंथ मिलेगा। मीन्स इसी शेप का जो ट्रू लेंथ है, 4 साइड का जो ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ ही मिलेगा। टॉप व्यू में क्या मिलेगा, टॉप व्यू में ओनली एक लाइन मिलेगा, है ना, दिस लाइन। क्यों लाइन मिलेगा, क्यों, प्लेन को कंसीडर किया जाता है मीन्स जीरो थिकनेस, मीन्स नेग्लिजिबल थिकनेस, इसका थिकनेस ऑफ दिस प्लेन को थिकनेस नेग्लेक्ट किया जाता है। तो लाइक ए लाइन, एक लाइन मिलेगा, है ना, एंड लाइन का लेंथ कितना होगा, लाइन का लेंथ ऑफ मीन्स ट्रू लेंथ ऑफ ए बी का जो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कौन, कौन, क्लियर। सो 4 जो पॉइंट्स है ए बी सी डी इन फ्रंट व्यू में ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम एंड डी प्राइम। इन टॉप व्यू में ए एंड डी, these 2 points will coincide, है ना, ए एंड डी coincide हो जाएगा की पॉइंट पर। Okay, so A and D. You can write A, then D in bracket or A, comma B. Okay, B and C, these 2 points, B and C, these 2 points also coincide. टॉप व्यू में coincide हो जाएगा, and you can write B in bracket C or B, comma C. Clear? So this is the first situation. If the plane is parallel with respect to one plane and perpendicular with respect to the other plane. इसको साइड व्यू में क्या मिलेगा, साइड व्यू में इस प्रोफाइल प्लेन में क्या मिलेगा, तो वर्टिकल लाइन मिलेगी शायद, एक वर्टिकल लाइन मिलेगी। गुड। सो इन प्रोफाइल प्लेन
सपोज दिस प्लेन इज प्रोफाइल प्लेन, तो इसमें क्या मिलेगा, एक वर्टिकल लाइन मिलेगा, एंड वर्टिकल लाइन की लेंथ कितनी होगी, इसका जो हाइट है इतना ही होगी, है ना, ऐसे एक लाइन मिलेगा। क्लियर? नाउ इफ the plane is parallel with respect to horizontal plane and perpendicular to this vertical plane. सर Okay. Yes. सर पिछले क्वेश्चन में सर एच टी तो मिल गया, वी टी नहीं मिलेगा? VT नहीं मिल गया, कौन सा इसमें? जी सर। क्या HP नहीं, VP तो है ना, पार्टिकल प्लेन जो स्क्वायर शेप है ये वर्टिकल प्लेन में ड्रा किया ना। वर्टिकल प्लेन में जो फ्रंट व्यू है, इसका अगर फ्रंट व्यू लूंगा इसी प्लेन को, तो फ्रंट व्यू क्या मिलेगा, एक स्क्वायर टाइप शेप मिलेगा, लाइक दिस, स्क्वायर टाइप शेप मिलेगा। यस सर। Now if the plane is parallel with respect to this horizontal plane and perpendicular with respect to this vertical plane, then what will be the projection? इसमें जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू विल गेट इन वर्टिकल प्लेन में फ्रंट व्यू मिलेगा, एंड किस टाइप मिलेगा, अगर फ्रंट व्यू लूंगा तो एक लाइन मिलेगा, क्यों लाइन मिलेगा, एंड दिस लाइन विल बी ही parallel with respect to this रेफरेंस लाइन से पैरेलल लाइन मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ये जो प्लेन है, प्लेन का जो थिकनेस है, थिकनेस को नेग्लेक्ट किया जाता है। ओके, तो एक लाइन मिलेगा, एंड दिस लाइन, इसी लाइन का लेंथ कितना होगा, AB का जो ट्रू लेंथ है उसी ट्रू लेंथ ही मिलेगा। सपोज AB का ट्रू लेंथ है 10 mm, तो 10 mm में मिलेगा। क्यों 10 mm मिलेगा, क्योंकि दिस ABCD प्लेन जो है, दिस प्लेन इज पैरेलल विथ रेस्पेक्ट टू दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन, कोई एक प्लेन के रेस्पेक्ट में पैरेलल है। ओके, अगर कोई प्लेन और लाइन कोई एक प्लेन से रेस्पेक्ट में पैरेलल होगा, तो देन वी विल गेट द ट्रू लेंथ और एक्चुअल लेंथ ऑफ द लाइन। ओके, टॉप व्यू में क्या मिलेगा, टॉप व्यू में स्क्वायर टाइप एक शेप मिलेगा, है ना, टॉप व्यू में स्क्वायर टाइप शेप मिलेगा, ABCD, ए पॉइंट जो है इसका प्रोजेक्शन करूंगा तो ए पॉइंट मिल जाएगा, स्मॉल ए। बी जो पॉइंट है इसका अगर प्रोजेक्शन करूंगा तो स्मॉल बी जो पॉइंट है इसी पॉइंट मिल जाएगा। सी जो पॉइंट है इसका अगर मैं प्रोजेक्शन करूंगा तो स्मॉल सी जो है उसी पॉइंट मिलेगा, एंड डी जो पॉइंट है इसका अगर मैं प्रोजेक्शन करूंगा तो स्मॉल डी जो पॉइंट है वो मिल जाएगा। ओके, सो ABCD लाइक स्क्वायर टाइप एक शेप मिलेगा। साइड व्यू में क्या मिलेगा इसको, प्रोफाइल प्लेन में सर हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा। गुड, सो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा। इसका जो नोटेशन होगा, नोटेशन कैसे डिनोट करूंगा, देखो डी पॉइंट एंड सी पॉइंट, डी एंड सी एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड होगा, है ना, तो दिस विल बी डी डबल प्राइम कॉमा सी डबल प्राइम, है ना। दूसरा जो पॉइंट है इसी पॉइंट मीन्स ए एंड बी दोनों पॉइंट कोइंसाइड होगा साइड व्यू में, है ना, तो इन प्रोफाइल प्लेन में ए एंड बी जो पॉइंट मिलेगा
This will be A double prime and B double prime. Clear? Now, if the situation like this means if the plane is perpendicular with respect to both the plane. Okay, this ABCD plane is perpendicular with respect to horizontal plane and perpendicular to the vertical plane. तो किस टाइप से मिलेगा? In top view will get, sorry, in front view will get a vertical line, means point A and point D एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करेगा, इसे एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करेगा, and this will be A prime D prime, and point B and point C will coincide in a single point B prime and C prime. Okay, so in front view we'll get a vertical line. Clear? In top view, this point A and point B will coincide in a single point AB. This AB, you can write A in bracket B or A comma B. Okay. Point D and C will coincide in a single point here, in a single point. Okay, so D comma C. So in both views, means top view and front view, will get a vertical line. And ये जो vertical line है, इसी vertical line का जो length है, this length will be true length of sides of this plane. Okay, इस plane का जो side है, 4 side, अगर if I consider this plane is a perfectly square shape, and having length of every edge is 10 mm. Okay, then length of this A prime D prime and B prime C prime will be 10 mm. Okay, and also the length of this DC and AB will be also 10 mm. Clear? Clear? Hello? Hello? Yes, sir. Clear or not? किसी का डाउट है? डाउट है? No, sir. Okay. No, sir. So now tell me in side view में क्या मिलेगा इसको? किस टाइप शेप मिलेगा? Square. Square. स्क्वायर शेप मिलेगा. गुड. मैं इसी साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ प्रोफाइल प्लेन. ओके, स्क्वायर शेप मिलेगा. बट पोजीशन तो मुझे जिस पोजीशन में उसी पोजीशन पर ही रखना है कि नहीं? प्लेन का जिस पोजीशन में प्लेन है उसी प्लेन में ही रखना है. कैसे करूँगा? तो मैंने रूल बताया था साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए. हाँ, ये जो पॉइंट है डी सी, इसी पॉइंट को प्रोजेक्शन लाइन, इसी पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन खींचना है. ए बी जो पॉइंट है इसी लाइन से भी प्रोजेक्शन लाइन खींचना है. ना, ये जो प्रोजेक्शन लाइन मिला है यहाँ से वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइन खींचना है. इसी लाइन से भी वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइन खींचना है. 55. ए प्राइम डी प्राइम जो है इसमें प्रोजेक्शन लाइन खींचना है
मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन, बी प्राइम डी प्राइम जो है इससे भी प्रोजेक्शन लाइन खींचना है। अभी जो इंटरसेक्शन हो रहा है इसी इंटरसेक्शन पॉइंट को कंसीडर करना है एंड इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से चारों जो पॉइंट मिल रहा है इस चारों पॉइंट को इसे कनेक्ट करना है। ओके, so in profile plane we will get a square type shape. Okay, तो फोर जो पॉइंट है वो पॉइंट, दिस पॉइंट इज ए, कौन सा पॉइंट होगा, ए वाला पॉइंट होगा, है कि नहीं? तो how can I write this point? A double prime. Clear? Sorry, this point will be A double prime. This will be sorry. इसी साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसे साइड व्यू में स्क्वायर टाइप शेप मिलेगा, है ना, स्क्वायर टाइप शेप मिलेगा और रेक्टेंगुलर टाइप शेप मिलेगा। ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट भी, दिस पॉइंट ए डबल प्राइम, सॉरी दिस पॉइंट ए डबल प्राइम, this is the B point, this will be B double prime, this will be C double prime, and this will be D double prime. Okay, now in this situation if the plane is parallel, sorry, perpendicular with respect to one plane and inclined with respect to another plane, ये जो vertical plane है, vertical plane with respect to this vertical plane, this ABCD plane is perpendicular, but with respect to this horizontal plane, this ABCD plane is inclined. Okay, so this ABCD plane is inclined with respect to horizontal plane, but perpendicular with respect to vertical plane. Now in this situation, and inclined means how much inclined? How much inclined with respect to horizontal plane? This plane is inclined with respect to horizontal plane at an angle theta. Okay. So अगर इसका so in top view, अगर इसका मैं टॉप व्यू कंसीडर करूंगा तो टॉप व्यू में जो शेप मिलेगा वो ट्रू शेप मिलेगा। No, sir. इसके True shape नहीं मिलेगा. ट्रू शेप नहीं मिलेगा। गुड, इफ द शेप ऑफ दिस प्लेन इज लाइक परफेक्ट स्क्वायर, देन इन टॉप व्यू विल नॉट गेट स्क्वायर टाइप शेप, है ना, स्क्वायर टाइप शेप नहीं मिलेगा, रेक्टेंगुलर टाइप शेप मिल सकता है ना, रेक्टेंगुलर टाइप शेप मिल सकता है। और इसका प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करूंगा? प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। फ्रंट व्यू, इन फ्रंट व्यू में जो फ्रंट व्यू क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा, क्योंकि दिस प्लेन इज पैरेलल विथ रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन से पैरेलल है ना। तो फ्रंट व्यू और वर्टिकल प्लेन में एक लाइन मिलेगा एंड दिस लाइन इंक्लाइंड with respect to this horizontal plane, है ना, horizontal plane से respect में inclined है। तो this inclination कहाँ मिलेगा? horizontal plane को रेफरेंस कर रहा हूँ, मीन्स inclination कहाँ मिलेगा?
वर्टिकल प्लेन में मिलेगा, क्लियर और नॉट? जो एबीसीडी प्लेन है, एबीसीडी प्लेन इंक्लाइंड है विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। इंक्लिनेशन कहाँ मिलेगा? वर्टिकल प्लेन में मिलेगा। कितना इंक्लिनेशन है? थीटा डिग्री इंक्लिनेशन है। सपोज थीटा इज 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इंक्लिनेशन है। ओके, सो फ्रंट व्यू में जो लाइन मिलेगा, दिस लाइन विल incline at angle 30 degree. ओके, सो 30 डिग्री एंगल से एक लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ किया, but and ये जो एबीसीडी प्लेन है, दिस प्लेन इज पैरेलल विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन। सो वर्टिकल प्लेन में जो लाइन मिलेगा वो ट्रू लेंथ मिलेगा, दिस विल बी ट्रू लेंथ। अगर स्क्वायर शेप है, मीन्स इफ द प्लेन इज स्क्वायर शेप and every side have 10 mm, then फ्रंट व्यू में जो लाइन मिलेगा ए प्राइम डी प्राइम बी प्राइम सी प्राइम से 10 mm ही मिलेगा, है ना? तो 10 mm यहाँ से काट करना है। ओके, नाउ जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू में क्या मिलेगा? टॉप व्यू में इसका जो शेप है, एक्चुअल शेप नहीं मिलेगा, है ना? स्क्वायर टाइप शेप नहीं मिलेगा। तो टॉप व्यू में प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करूंगा? जो ए प्राइम डी प्राइम पॉइंट है, वहां से प्रोजेक्शन लाइन खींचना है। बी प्राइम सी प्राइम जो पॉइंट है, वहां से भी प्रोजेक्शन लाइन खींचना है। ओके, नाउ ये जो ए पॉइंट ए बी सी एंड डी, हाउ विल फाइंड आउट? कैसे इसको फाइंड करूंगा? तो इसी पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन खींचना है, जो ये इंक्लिनेशन लाइन काट कर रहा है, रेफरेंस लाइन को यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचना है। एंड ए बी साइड का जितना लेंथ है, उसी लेंथ से मेजर करके ये दोनों पॉइंट निकालना है एंड इसी पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन खींचना है। अभी ये जो वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइन मैंने खींचा था एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लाइन जो मैं खींच रहा हूँ, ये दोनों प्रोजेक्शन लाइन जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, इसी से ए बी सी डी पॉइंट मिल जाएगा। ओके, नाउ वी हैव टू कनेक्ट दिस 4 पॉइंट्स। ए बी सी डी पॉइंट मिल रहा है, इसी पॉइंट को, सारे पॉइंट को कनेक्ट करना है। क्लियर? Now in this situation, in this case, a plane is inclined to vertical plane. In this situation, the plane is inclined with respect to vertical plane and perpendicular with respect to horizontal plane. Horizontal plane से
परपेंडिकुलर है. ओके, so this A B C D तो plane है. This plane is perpendicular with respect to horizontal plane. Perpendicular with respect to horizontal plane means in top view will get the actual length of side AB. Okay, side AB का जितना length है, suppose this length is 10 mm, then we'll get 10 mm in top view means horizontal plane. Horizontal plane में एक लाइन मिलेगा. This line will inclined with respect to this vertical plane at an angle theta. Okay, this theta angle से inclined है. So theta angle, sorry, not theta, in vertical plane denote it like phi. Okay, so phi angle से inclined है, तो phi angle से एक लाइन मिलेगा, true length. Okay, true length, this will be 10 mm. Okay, now a point AD and point BC मिला है. इसी पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन खींचना है, वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइन खींचना है. एंड एक्स वाई रेफरेंस लाइन पर जो जहाँ इंटरसेक्शन किया है उसी लाइन से भी एक वर्टिकल लाइन खींचा हूँ. एंड दिस बी सी का जितना लेंथ है, बी सी ट्रू लेंथ मीन्स वर्टिकल साइड का, डिनोटेड बाय वी टी, वर्टिकल साइड. वर्टिकल साइड का जो ट्रू लेंथ है उसी ट्रू लेंथ मेजर करके सपोज दिस ट्रू लेंथ इज 10 mm, सो 10 mm मेजर करके दो पॉइंट निकालना है. ना इसी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस लाइन खींचना है. एंड ये जो वर्टिकल प्रोजेक्शंस लाइन एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस लाइन जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, these intersection points are A prime, B prime, C prime and D prime. Okay, now we have to connect these 4 points, 4 intersection points, A prime, B prime, C prime, D prime. Okay, so in front view we'll get like this type of shape. Okay, means rectangular type shape. Rectangular type shape. Here. इन साइड व्यू में क्या मिलेगा? सर रेक्टेंगुलर मिलेगा तो उसकी ट्रू लेंथ नहीं मिलेगी शायद. नहीं, ट्रू लेंथ ये जो लाइन है मीन्स जो प्लेन है ये वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड किया है ना. हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है मीन्स सॉरी वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है. ओके, तो वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है मीन्स जो प्रोफाइल प्लेन है, प्रोफाइल प्लेन से भी इंक्लाइंड ही होगा कि नहीं? यस सर. तो फिर सर ट्रू लेंथ थोड़ी मिलेगी उसकी. ट्रू लेंथ नहीं मिलेगा. ट्रू लेंथ मिलेगा ओनली ए प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन के रेस्पेक्ट में पैरेलल है. सो ओनली हॉरिजॉन्टल मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही ट्रू लेंथ मिलेगा.
जिस प्लेन से रेस्पेक्ट में पैरेलल है उसी प्लेन में ही मिलेगा ट्रू लेंथ। क्लियर? So these three situations मैंने बताया, plane may be parallel to one plane and perpendicular to the another plane. Plane may be parallel to one plane but inclined to the other plane, and और एक situation है, the plane may be inclined to both the plane. अगर if the plane is inclined both the planes, mean vertical plane and horizontal plane, then I will draw the projections. Okay. So in this situation, if the plane is inclined both the planes, okay, both the planes, horizontal and vertical plane, then I will draw the projections. So, if the plane is inclined to both the planes, then we will not get the true shape of the plane. True shape मिलेगा? हेलो? No, sir. ट्रू शेप नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन जब मैंने बताया था उसी टाइम भी मैंने बताया था, इफ द लाइन इज inclined with respect to both the planes, then will not get the true length of the line. Similarly, if the plane is inclined with respect to both the plane, then also we will not get the true shape of the plane in either in vertical plane or horizontal plane. कोई भी plane में true shape नहीं मिलेगा, है ना? But वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में ट्रू शेप नहीं मिलेगा। किस टाइप की शेप मिलेगा? अगर मीन्स सपोज दिस प्लेन इज लाइक ए स्क्वायर टाइप शेप, देन प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप शेप मिलेगा, एंड रेक्टेंगुलर नॉट ए परफेक्ट रेक्टेंगुलर, ऐसे इंक्लाइन भी हो सकता है ना? इसको कैसे ड्रॉ करना है मैं बताऊंगा। उससे पहले जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन मैंने बताया था, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन, दिस डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन हैव डिफरेंट रेस्टिंग पोजीशन, मींस द प्लेन रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, or a plane resting on one of its base on vertical plane. मीन्स जो डिफरेंट टाइप ऑफ शेप मैंने बताया था प्लेन की शेप, दिस प्लेन में बी ही आइदर रेक्टेंगुलर टाइप, प्लेन में बी आइदर स्क्वायर टाइप और रेक्टेंगुलर टाइप, मे बी पेंटागन टाइप, maybe hexagon type, or maybe circle. Okay. So now in these four cases, means, if the plane type is like a rectangular or a square or pentagon or hexagon, इसी प्लेन को, जो प्लेन का जो पोजीशन है उसी पोजीशन को मीन्स आइडेंटिफाई करने के लिए कोई एक साइड, प्लेन का कोई एक साइड का रेफरेंस लेना है, मीन्स उसी साइड कौन सा कोई एक प्लेन से रेस्पेक्ट में पैरेलल होगा। क्लियर? मीन्स प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन जो है इसमें जितने सारे प्रॉब्लम मिलेगा इसमें मेंशन होगा कोई भी एक साइड, मीन्स इन केस ऑफ ट्राइंगल देयर आर 3 साइड्स, है कि नहीं? 3 साइड्स है, any of these 3 sides in case of rectangular, in case of square
any of these four sides, rectangle, in case of a square or rectangular, four sides है. In case of pentagon, five sides है. In case of hexagon, six sides है. Okay. So any of one side means this plane have to rest any of one side with respect to parallel to the one plane. Okay. Clear? Suppose in case of triangle, I mean, in the first case, suppose if the means if I tell that if any one of the side is raised, means it's one of its base side on the HP. Okay, side on the HP means side on the HP means one side will be a vertical line. कोई एक साइड वर्टिकल लाइन हो, like this vertical line means if a plane resting on one of its base side on VP, here. Now, as for example, one problem, a square lamina ABCD of side 40 mm. 40 mm means two length. Means this lamina means plane of the plane of ABCD. Type of plane ABCD is square type, and length of every side is 40 mm. And this plane is perpendicular with respect to horizontal plane and parallel with respect to vertical plane. Draw the projections. Okay. So parallel with respect to vertical plane. Vertical plane respect to parallel है. Vertical plane respect to parallel means वर्टिकल प्लेन को रेफरेंस लिया है, वर्टिकल प्लेन से रेफरेंस में पैरेलल है, सो विल गेट लाइन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन में एक लाइन मिलेगा, टू लाइन मिलेगा. दिस लाइन विल बी 40 mm. सो 40 mm में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है. ओके, 40 mm में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है. नाउ इसी जो ए एंड AD एंड BC पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन खींचना है. ऐसे प्रोजेक्शन लाइन खींचा हूं मैंने. फर्स्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक लाइन खींचना है. दिस लाइन विल बी 40 mm लेंथ, and then you have to draw the projections line from FB point and BC point. Okay. Now this plane is perpendicular
to the horizontal plane, perpendicular to the horizontal means and parallel to the vertical plane. So horizontal perpendicular to the horizontal plane means vertical plane में स्क्वायर टाइप शेप मिलेगा and length of this square length the length होगा this length will be also 40 mm है ना. So 40 mm यहाँ से 40 mm सी पॉइंट से डी पॉइंट तक 40 mm लेना है. अच्छा प्रोजेक्शन लाइन खींचना है एंड ये जो वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइन खींचा हूँ वहाँ जो इंटरसेक्शन पॉइंट में दिस पॉइंट इज ए प्राइम एंड डी प्राइम. नाउ ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम कनेक्ट करना है. ओके तो इसे स्क्वायर मिल जाएगा. क्लियर. हेलो क्लियर. Yes, sir. Second situation, the second example, an equilateral angle. Equilateral angle means ये बता पाएंगे. इक्विलेटरल एंगल मींस सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस तीनों साइड ट्रायंगल की सेम है. तो साइड जो ट्रायंगल की सेम है वो जो सेम है है. तीनों सेम है. ओके सो 3 sides सेम and the length of 3 sides is 50 mm is parallel to the vertical plane and 15 mm in front of the vertical plane. So in front of vertical plane 15 mm है. ओके सो इन कौन सा प्लेन का रेफरेंस लिया. वर्टिकल प्लेन का. सो हॉरिजॉन्टल प्लेन में 50 mm डिस्टेंस में लाइन मिलेगा है ना. क्लियर. ये 15 mm डिस्टेंस जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलेगा क्योंकि वर्टिकल प्लेन का रेफरेंस लिया है. एंड इट्स बेस ए बी इज पैरेलल टू पैरेलल मीन्स किससे पैरेलल है. पैरेलल एंड 75 mm अबव HP. जो ए बी लाइन है दिस लाइन इज 75 mm above the HP. 75 mm above the HP मीन्स कौन सा प्लेन का रेफरेंस है. HP प्लेन का. तो वर्टिकल प्लेन में 75 डिस्टेंस में ए बी एंड मीन्स ए बी लाइन ए बी जो पॉइंट है ए प्राइम बी प्राइम पॉइंट ओके इसे मिल जाएगा. ए बी पॉइंट मीन्स ए बी जो लाइन है एंड दिस ए बी लाइन विल बी हाउ मच 50 mm. तो 50 mm 75 mm डिस्टेंस से फ्रॉम दिस XY लाइन से 75 mm डिस्टेंस में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है एंड दिस लेंथ ऑफ द लाइन विल बी 50 mm. ओके नाउ सी प्राइम जो है पॉइंट ये मैं कैसे फाइंड करूंगा. सी पॉइंट विल बी मस्ट बी इन मिडिल ऑफ दिस बी प्राइम ए प्राइम बी प्राइम जो पॉइंट इसके मिडिल में मिलेगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस एंड दिस प्लेन to this vertical plane परपेंडिकुलर है. तो जो सी प्राइम पॉइंट है ए प्राइम बी प्राइम से बीच में आएगा. तो बी ए बी जो लाइन मिला था इसका मिडिल पॉइंट निकलना है. मिडिल पॉइंट से एक प्रोजेक्शन लाइन खींचना है. ओके नाउ बी प्राइम जो पॉइंट मिला था इसी बी प्राइम पॉइंट से 50 mm मेजर करके यहाँ इंटरसेक्शन करना है एंड
सेम मेजरमेंट 50 mm मेजर करके ए प्राइम पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन पर एक इंटर ऐसे आर्क खींचना है। तो जहाँ दोनों आर्क इंटरसेक्शन होगा, दिस पॉइंट विल बी सी प्राइम। नाउ बी प्राइम सी प्राइम कनेक्ट करना है एंड ए प्राइम सी प्राइम कनेक्ट करना है। क्लियर? क्लियर? हेलो, क्लियर? Yes, sir. ड्रॉ कर पा रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now example 3, a square Oh, lamina sir. ABCD of side 40 mm. Yes. Yes. कोई क्वेरी है? डाउट है किसी को? हेलो, किसी को डाउट है? No, sir. No, sir. ओके। So now in example 3, in this example a square lamina ABCD of side 40 mm. A square type shape है ना? So every side will be 40 mm and is perpendicular to VP with respect to VP perpendicular and parallel to the horizontal plane. Draw its projections. Okay, so parallel with respect to horizontal plane. Parallel with respect to horizontal plane means horizontal plane का मीन्स वर्टिकल प्लेन में एक लाइन मिलेगा, है ना? और एंड परपेंडिकुलर टू दिस वर्टिकल प्लेन मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसका ट्रू शेप मिलेगा। सॉरी, हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ट्रू शेप मिलेगा, ट्रू शेप मिलेगा ना, क्योंकि दिस प्लेन इज पैरेलल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इसमें ट्रू शेप मिलेगा एंड वर्टिकल प्लेन में एक लाइन मिलेगा एंड द लेंथ ऑफ दिस लाइन विल बी हाउ मच 40 mm 40 mm होगा 40 mm। okay, now a प्रोजेक्शन लाइन खींचना है। BC जो साइड है, BC साइड विल बी ऑल्सो 40 mm, तो BC 40 mm मेजर करना है। यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन खींचना है। AD पॉइंट, AD लाइन, AD साइड जो है, AD साइड भी मिल जाएगा, तो ऑल साइड्स विल बी 40 mm, ऑल साइड्स विल बी 40 mm। ओके, स्क्वायर टाइप से मिल जाएगा। क्लियर? In example 4, an equilateral triangle ABC of 50 mm means every side will be 50 mm. Side has its plane parallel to the horizontal plane. Means horizontal plane with respect to horizontal plane parallel है, and AB parallel to the hub vertical plane. AB line जो है, this line is parallel to this vertical plane. Draw its projections and the corner C is 15 mm from HP. Okay, 15 mm from HP. So corner C is 15 mm from HP and 45 mm from BP. So first 45 mm from BP consider करता हूँ। So this 45 mm from BP means horizontal plane में मिलेगा, वर्टिकल प्लेन का रेफरेंस लिया है,
तो 45 mm डिस्टेंस में सी पॉइंट मिल जाएगा, ये सी पॉइंट। ओके, तो 45 mm डिस्टेंस में एक पॉइंट लेना है, सी पॉइंट। नाउ इसी पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन खींचना है। ओके, एंड वर्टिकल प्लेन में जो सी प्राइम पॉइंट है वो कहाँ मिलेगा, 15 mm डिस्टेंस में। तो एक्स वाई लाइन से 15 mm डिस्टेंस में एक उसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेना है, जो पॉइंट सी प्राइम है। नाउ ए प्राइम एंड बी प्राइम पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये कितना डिस्टेंस पे होगा, टोटल साइड का कितना डिस्टेंस है, 50 mm है, एवरी साइड इज 50 mm। तो सी प्राइम जो पॉइंट है मिडिल में है, मीन्स यहाँ से 25 mm डिस्टेंस में बी प्राइम मिलेगा, एंड सी प्राइम से 25 mm में ए प्राइम मिल जाएगा। ओके, मीन्स ए प्राइम टू सी प्राइम इज 25 mm एंड सी प्राइम टू बी प्राइम इज 25 mm। तो 25 mm में सी प्राइम एंड बी प्राइम मिल जाएगा, टोटल इज 50 mm। ओके, सो ए प्राइम बी प्राइम लाइन मिल गया। अभी ए प्राइम लाइन से प्रोजेक्शन लाइन खींचना है। सिमिलरली बी प्राइम पॉइंट से भी एक प्रोजेक्शन लाइन खींचना है। प्रोजेक्शन लाइन खींचना है। नाउ ए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी कैसे फाइंड करूंगा, कैसे फाइंड करूंगा, मेरा सी पॉइंट पता है ना, सी पॉइंट पता है। तो सी पॉइंट से 50 mm में जा करके विथ द हेल्प ऑफ कंपास सी पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करना है, एंड ये जो प्रोजेक्शन लाइन पर जहाँ इंटरसेक्शन होगा, दिस पॉइंट इज बी प्राइम। सिमिलरली 50 mm में जा करके सी पॉइंट से विद द हेल्प ऑफ कंपास और डिवाइडर इसी प्रोजेक्शन लाइन पर एक आर्क ड्रॉ करना है, मीन्स जहाँ इंटरसेक्शन होगा, दैट इज ए। ओके, नाउ you have to join this A, B, C, no point join करना है। क्लियर? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Sir, attendance. अटेंडेंस दूंगा। टाइम हो गया। ओके, चलो। सो अटेंडेंस ले लो सर, अटेंडेंस। तो दिस अप टू एग्जाम्पल 4, जो 4 एग्जाम्पल है, ये चारों एग्जाम्पल तक होम असाइनमेंट है, इसको पूरा करना है। हो जाएगा सर, अब टाइम हो क्या गया। हो जाएगा ना? यस सर। ओके, Yes, sir. अटेंडेंस दे दो, चैट बॉक्स में पी और प्रेजेंट करके टाइप करके भेज दो।